So now let's practice some of the questions related to the last topic which we have just covered, that is the inclined plane stresses. कुछ questions कर लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा better clarity मिल जाएगी कैसे questions में आपको concept समझा उसको apply कैसे किया जाता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी वी हैव कंफ्यूजन लाइक हाउ टू डील विद दिस। तो सबसे पहले इसको बात कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस एलिमेंट इज शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन बीई। बीई मुझे ये प्लेन दिया हुआ है, दिस इज प्लेन बीई, इसमें मुझे नॉर्मल स्ट्रेस पूछा हुआ है। देखो फॉर एग्जांपल आपको जो प्लेन दिया हुआ है आपके सामने, द प्लेन विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस प्लेन। इस प्लेन में आपको ये सिग्मा, ध्यान रखना मुझे ये सिग्मा एक्स दिया हुआ है और ये मुझे सिग्मा वाई दिया हुआ है। ध्यान रखने वाली बात है, द प्लेन विच इज प्रोवाइडेड टू अस उसमें कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है। इसका मतलब दिस इज अ प्रिंसिपल प्लेन, जो हो गया सिग्मा वन एंड दिस इज सिग्मा टू। जब शेयर स्ट्रेस नहीं होता है तो प्रिंसिपल प्लेन हो जाता है, यू नो दैट फाइन। What they are saying is that you have to find the value of normal stress on any other plane which is inclined at an angle of 30 degree anti-clockwise with the given plane। तो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या कहता था, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू कॉस टू थीटा। ये हमारा फॉर्मूला था। टाउ नहीं आएगा क्योंकि इसका टाउ है ही नहीं। वैल्यूज यू हैव टू पुट जस्ट वैल्यू, दिस विल बी 100 प्लस 100 अपॉन 2, 100 plus 100 upon 2 plus 100 minus 100 is 0, तो you will get this value is 100 न्यूटन पर mm square। अगर पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब दिस इज टेंसाइल इन नेचर। द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन विल बी 100 न्यूटन पर mm square। फाइन। सबसे पहले चेक कर लेना जो प्लेन गिवन है, व्हाट द प्लेन इज, इफ इट इज हैविंग shear stresses then that will be the general plane जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, otherwise it will be the principal plane। principal plane में sigma 1 and sigma 2 you have to consider it directly। fine। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन अ प्योर टेंसाइल मेंबर द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड इज दिस। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड इज दिस। ठीक है, राइट एंगल पे है नॉर्मल stress on a plane right angle to the direction of load is this। what is the normal stress on a plane whose normal is inclined at 60 degree to the direction of the load। आपको इन्होंने ये पूछा हुआ है कि आपको एक प्लेन गिवन है। सबसे पहले लेट्स फॉर्म अ प्लेन लाइक दिस, दिस इज द प्लेन व्हिच वी हैव एंड व्हाट दे आर सेइंग इज दैट दे आर सेइंग कि प्योर टेंसाइल मेंबर है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड। ये अगर लोड लग रहा है तो ये लोड के डायरेक्ट डायरेक्शन पे राइट एंगल पे, इसका मतलब उस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है दैट इज 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर व्हिच इज व्हाट दे आर सेइंग। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन ऑफ लोड अपना ये वाला लगा लूं, फॉर एग्जांपल दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ लोड, तो राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, इसका मतलब ये अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ लोड है, इस पे जो नॉर्मल आ गई है, the normal stress on a plane, ये plane हुआ, this is the plane right angle to the direction of the load, this is the direction of load and the plane is a right angle to this direction of load is this। इस पे नॉर्मल इन्होंने 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है। इट मींस दैट दिस इज 100 न्यूटन पर mm square which is given to us। what they are saying, what is the normal stress, सिर्फ लैंग्वेज घुमाई है, बात वही है। what is the normal stress on a plane whose normal is inclined at 60 degree to the direction of load, 60 degree to the direction of load। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ लोड तो यही था, डायरेक्शन ऑफ लोड से 60 डिग्री की बात की गई है। इट मींस दैट if this is the direction of load and if I'll say that this is the plane which we are considering, this is the plane which we are considering, it means that this is the direction of the load, with the direction of the load, with the direction of the load, what they are saying is that they are saying that the whose normal is inclined at 60 degree to the direction of the load। इस plane का जो normal है वो normal कुछ ऐसा जा रहा होगा, this will be the normal to this plane, वो डायरेक्शन ऑफ द लोड से 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। दिस इज द केस। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन हुज नॉर्मल इज इंक्लाइन एट 60 डिग्री द डायरेक्शन ऑफ द लोड। इस पे आपको इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, दिस इज द वैल्यू विच दे आर आस्किंग। देखो अगर ये 60 डिग्री है, ध्यान समझ में आ गया ना। पहले व्हाट दे आर सेइंग इज दैट दिस इज द प्लेन व्हिच इज 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द स्ट्रेस इज दिस मच। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन at which the normal, this is the normal, ये प्लेन मैंने कंसीडर कर लिया, इस प्लेन का नॉर्मल मतलब इस प्लेन से 90 डिग्री, दिस इज द नॉर्मल। इस नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू को निकालना है जो डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, डायरेक्शन ऑफ लोडिंग तो यही है, से 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। ध्यान रखना अगर ये 60 है, if this angle is 60 degree, with a simple geometry, with a simple geometry, if this angle is 60, this angle is 30, this angle will also be 60 degree। तो you have to calculate the value of this। क्या गिवन है, कंडीशन इज दैट कि आपको ये प्लेन पे स्ट्रेस गिवन था और इस प्लेन पे जो 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, इस गिवन प्लेन से उस पे स्ट्रेस निकालना है। सिग्मा 1 मुझे गिवन है, सिग्मा 2 मेरे को गिवन नहीं है, उसको मैं जीरो मानूंगा। सिग्मा एक्स मुझे निकालना है,
sigma x is equal to sigma 1 plus sigma 2 by 2 plus sigma 1 minus sigma 2 by 2 cos 2 theta. यही बनता है sigma 1 plus sigma 2 by 2 मतलब sigma 1 is 100 upon 2 which is 50 plus sigma 1 minus sigma 2 by 2 100 upon 2 it is 50 cos 2 theta. This will be the value. It means that you can calculate this value. This is 50 plus 50 cos 60. 50 plus 50 cos 60. I guess you can understand what I am trying to make you understand. You have to calculate the value of normal stress. The normal stress value on the plane which is like this. The normal stress is at an angle of 60 degree with the given loading system. So this is 60, it means that this will also be 60 which is anti-clockwise direction. So you can directly apply the relation and you can get the value of the stress. तो वो मिल जाएगा हमें. ठीक है. Now let's proceed to the next question. Concept बहुत ध्यान से समझोगे तो ये सारे numerical बन जाते हैं. Otherwise नहीं बनता. ये मत समझना कि इस एग्जाम के अंदर conceptual questions नहीं आते. It's not like that. They will ask the conceptual question. I'm telling you because without concept there is nothing in engineering. आप रट के कुछ नहीं कर सकते. Fine. Let's come to the next part. Next question. A specimen is subjected to pure shear. Pure shear इसका मतलब only tau will be present. And a shear stress is this. Tau की जगह उन्होंने हमें Q दे दिया है, तो we have to consider it to be Q because in the question they are saying Q. The tensile and compressive stress is this. ये मुझे sigma को P बोला हुआ है. Occurs on a plane 45 degree to the shear stress. It means that you have a plane of pure shear. This is a plane of pure shear in which the only shear stress will be present like this. Let's say that the shear stress is present like this. जानते हैं shear stress convention हमने समझा हुआ है shear stress convention. The shear stress will be present like this and the value of shear stress they have provided us to be Q. Fine. They are saying that 45 degree पे एक और plane जाता है. You have to calculate the ratio of P by Q. If the 45 degree plane, like say that this is the 45 degree plane and on this 45 degree plane the normal stress is having intensity of P. This is 45 degree and the normal stress is having intensity of P. This is what they are saying. Now this P is basically equal to, you can say that sigma x which is equal to, इसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है या फिर इसको ऐसे लिख लो. मैं आपको यहाँ ऐसे करके समझा देता हूँ. On this plane the normal stress is, let's say that sigma x which is equal to 0. The normal stress here is sigma y which is also equal to 0 and this is tau xy. This is the general case. We have to find the value of normal stress on either plane at which this is tau. This is, you can say that this is normal stress. This is sigma x dash. Similarly, sigma y dash and tau x dash y dash. We have to calculate sigma x dash. This is equal to sigma x plus sigma y divided by 2 plus sigma x minus sigma y divided by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. This is what the case is. Fine. There is no sigma x, no sigma y. This will become 0. So the result will be only tau xy. Tau xy is what? Q. This is Q sin 2 theta, matlab sin 90 which is equal to 1. So this will become, this P is equal to Q because sigma x is what? Sigma is the normal stress on the plane which is inclined angle of 45 degree. तो किसके बराबर है? इसके बराबर है. तो मैंने यही तो निकाला. Sigma x dash is this. It means that P is equal to Q and they are asking us the ratio of P by Q. तो यहाँ से P by Q कितना आ जाएगा? This will be 1:1. This is the result.